ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲਾਅ ਫਰਮ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਅਤੇ ICPC ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 599 2900 ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 186679088984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਇਹਦਾ ਮੰਥਲੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਪਡੇਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਲੂਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਸਦ ਸਈਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। Thank you. Thank you. Thanks once again for coming over here. So let's start off. How was the new year and where does the real estate market stand as compared to the previous months? We haven't seen a lot of change since we talked last. November stats show that inventories are actually quite low. In fact, they're like at an all-time low for the last decade. Right. So given that, we see that pricing hasn't changed much either. You know, the expectation that a lot of buyers are having is that, you know, prices will come down substantially, Right. but we have not seen that in the marketplace. And I was going through the statistics which pointed out that rather the market prices were 2 to 4% up whereas it didn't go down. In certain areas, that's Right. true, but generally, I think we are down a little bit from the high levels that we had before. Right. So with these statistics which are coming forward and with your experience, let's talk a little bit about now what is in reality. Right now, the buyers are there, this is what we are hearing. But because of the banks becoming a little bit more stricter in giving the loans, there are many collapse deals which are happening. Are you aware of those, and what do you think is going to happen in the future? Is the government concerned about this? I don't think they're concerned at this point. And yes, we have seen quite a few deals collapsing. Right. As you know, I own a real estate company, and I'm totally aware of the sales that are happening in our company. Yes, we've noticed that a lot of deals are collapsing. People are finding it harder to get their financing. And in general, we're finding that buyers almost have a buyer's remorse after Right. they actually, you know, do a deal on a property. They tend to find ways to collapse the deal. ओके असद जी, आपसे बात करें थोड़ा सा लोअर मेनलैंड और सरी के मतलब, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो आपने क्या देखा? ये जो दिसंबर महीना तो वैसे भी हम देखते हैं छुट्टियों के कारण ज़्यादातर स्लो ही होता है, लेकिन फिर भी इस बार क्या कुछ पिछले सालों से कुछ डिफरेंट नज़र आया आपको? हरप्रीत जी, थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में डिफरेंट नज़र आया, स्पेशली नवंबर का महीना। प्राइजेज एक्सपेक्टेड के नीचे जाएंगी, लेकिन about 1.2% prices went up in month of November in Fraser Valley. That was a little different thing. But overall the prices went about 3% down for the whole year. Right. अगर हम सारे साल को sum up करें तो sales reduce हुई हैं between 14 to 19%. Right. और prices overall reduce हुई हैं about 3%. Right. जिसमें like November month it went 1.2% up, but in December month we did not see all the statistics, but it looks like it is going down. Right. Because a lot of collapse deal and other जी. things as Louis So mentioned. जनवरी को क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अभी तक क्या हो रहा है और क्या आगे अनुमान लगा रहे हैं आप? जनवरी भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रही जी। वट अगर 19-20% प्राइजेस डाउन हुई हैं तो ये वहीं स्टे करेंगी प्रॉबेबली। Right. मार्केट में इन्वेंट्री नहीं है, जो कि हम नहीं देखते कि जनवरी में भी आएगी जी। और फरवरी में भी नहीं आएगी। आई थॉट स्प्रिंग में मोर हाउसिंग इन्वेंट्रीज आएंगी, Right. तो मोर सेल्स देखेंगे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये हो रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशंस
इतनी ख़राब नहीं हुई है कि लोग डेस्परेट होकर घर बेचना शुरू करते हैं. दैट्स व्हाट वी फाइंड आउट इन 2012. क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत लो है. बहुत लो है ठीक. और वो अफोर्ड कर रहे हैं. Right. तो वो क्या कर रहे हैं कि बजाय इसके कि प्राइस लो करने के, दे आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द मार्केट Right. एंड वेटिंग for the Good times to come. times to come. Right. When, like Mr. Asad has said, a very important point, the people are not desperate to sell, those who want to sell. If they can hold, because the interest rates are so low, they are still holding on to it. But again, the statistics which have come forward and the projections, they are saying that now, in this 2013, especially the prairies, there is going to be some growth over there. And Vancouver area, the western region and the eastern region probably won't see much hike in the prices. What is your observation about it? I believe that's true. I think that you know, the conditions that we have locally with the higher prices and so forth, you know, are backing buyers away, especially the investors and the foreign investors. Right. So I do believe that prediction is true. So again, as Mr. Asad was saying, that right now it's the same situation which was existing in December also. So now in January and February, again, anybody who wants to sell and buy, what would be your recommendation to them? The buyers, you know, it's a buyer's market. So get out there and shop and, you know, put your bids in and, you know, if you don't get this one, go bid on the next one. We don't think that the pricing is going to go up very much, if at all. Right. And for the sellers, again, you have to, if you need to sell, make sure you price your property right. Don't keep thinking of last year and, you know, the pricing that we had then, Right. because it's probably not going to happen. So if you're realistic, you can sell. Right. प्रॉपर्टी, जैसे लुइस ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, राइट प्राइस करनी प्रॉपर्टी की. अब ये बड़ी समस्या है खास तौर पे हमारे भाईचारे के अंदर, क्योंकि आपने कह दिया कुछ और आप काम करते हैं, मैंने आपकी सुन के भी मेरा घर इतने का बिका था, मेरा भी इतने का बिकना चाहिए, उसकी वजह से ये टसल हो जाता है. क्योंकि आप तो इस बिजनेस में हैं, तो आप क्या रिकमेंडेशन करते हैं अगर किसी ने बेचना है या खरीदना है? देखिए, सिचुएशन पर बड़ा डिपेंड करता है हरप्रीत जी. एक तो मेन चीज़ ये है कि हाउ डेस्परेट किसी को बेचने की ज़रूरत पड़ रही है. अगर किसी ने बेचना है, घर अपग्रेड कर रहा है, अगर कोई अच्छी डील उसको मिल रही है जी, तो बेहतर है कि वो अपना घर रीजनेबल प्राइस पर बेच दे जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, और दूसरी नेक्स्ट लेवल पर वो मूव हो जाए, बजाय इसके कि वो प्रॉफिट देखना शुरू कर दे. कि अगर वो यहाँ लूज कर रहा है एक साइड में, तो दूसरे साइड में वो गेन कम पे मिल रहा है, गेन भी कर रहा है. इसी तरह मार्केट जो है ना मूव होती है और होना चाहिए. लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2010 में, वो अब नहीं मिल रही. प्राइजेस आर डाउन, आई मीन एटलीस्ट 3% डाउन दिस ईयर. राइट. But then you are in the market, your house is not selling. Right. So that's not the point. So think realistically. Realistically, if you got a reasonable price and you are again ready to move on a better deal, so go for it. Absolutely. And sell it. Condo, if you talk about the condo market, and you know, there has been a lot of talk, especially in the eastern region and even the Vancouver area also, that more and more condos are being built, and there are many people who have already burned their hands. So with your experience, what would be your recommendation? Because still we are hearing a lot of saying going on that you should invest in these condos and you will make some good profits out of it. Okay, well, the condo market is the entry-level market, and so it's always going to be relatively strong. Right. You know, and the developers are realizing that the pricing is lower. Excuse me. So being lower, they're adjusting their prices accordingly, and we're seeing that the product that is priced right is still selling fairly quickly, especially in the Vancouver area. Right. Good projects sell out quickly. Great. And जाते जाते असद जी सिर्फ एक सेकंड में अगर मैं कहूँ कि न्यू बायर्स के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है? न्यू बायर्स के लिए रिकमेंडेशन मेरी ये है कि ये अच्छा टाइम है बाय करने के लिए. इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो है, 5 year फिक्स 2.9, 2.99. Right. So go for it. Great. Don't wait. Thank you very much for your time, and waiting for the next episode the next month, whereby we'll talk about if there has been any change. Thanks and best wishes. Our pleasure. Thank you.